So I'm extremely worried that the children जो उनकी health है वो खराब होती जा रही है, उनकी motor skills development नहीं हो पा रहा है. I feel is the most evil food that can exist on this planet is the French fries. कि लड़के को काम ज़्यादा करना पड़ता है, they have to do physical labor, so he needs more nutritious food. लड़की को सिर्फ घर का काम करना है, उसको सिर्फ चूल्हे चौके का काम करना है. So she on the other hand does not require so many nutrition. So उनकी risk taking ability कम हो जाती है with age. Okay. So they are skeptical about this thought कि नहीं यार कल को हम लोग कुछ कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो गया तो उससे बेटर है कि हम कुछ ना करें. आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. और डोंट कहो कि फ्री के बाद में मुझे कुछ सुनना बंद हो गया था. आई कुड नॉट हियर व्हाट यू वर आस्किंग. राइट. बट तो मेरा जो सोल्यूशन चांदनी के लिए रहेगा सो कॉल्ड फ्री के अंदर थैंक यू सो मच. फ्री में ये रहेगा. ओके, इज दिस द 360 डिग्री अप्रोच? हम भारत में रहते हैं और वहाँ 365 दिन कुछ ना कुछ त्यौहार होते ही हैं, फेस्टिवल्स. और ऐसे भी देखें तो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ ओकेजन्स में हम सेलिब्रेट करते ही रहते हैं. और अभी तो फेस्टिवल भी अराउंड है, दिवाली इज़ कमिंग, सो एवरीवन विल बी गोइंग फॉर स्वीट्स एंड ऑल दोज रिच फूड्स. तो उस टाइम हम क्या कॉन्शियस ईटिंग करें सो दैट हमें गिल्ट भी ना हो और वेट भी इंक्रीज ना हो. जो घर का घी है इट इज़ वेरी हेल्दी. घी को लेके किसी भी तरह के हमको उसको एक विलन नहीं बनाना है हमारी लाइफ में. अच्छा, इज इट सो? क्योंकि हम अवॉइड करते हैं घी को. एन अमेजिंग थिंग टू बी इन योर डाइट. आप सरप्लस की बात कर रहे हो. हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम खुशी में भी खाते हैं, हम गम में भी खाते हैं, जब इमोशनल सेटबैक्स हो तो भी खाते हैं, स्ट्रेस में भी खाते हैं, और कुछ नहीं कर रहे तो भी खाते हैं कि मूड एक्चुअली ठीक रहे उससे. हाउ मेनी टाइम्स चांदनी इज ईटिंग आउटसाइड? आई थिंक इट विल बी अराउंड 10 to 15 meals. Yeah, 100% 10 to in a 15 month. meals in a month we are having outside. So this is your job, like this is your profession and you have to do this. I cannot tell you कि नहीं बाहर जाना बंद कर दो, घर पे रहो. So that is impractical and I would not recommend it also. तो इस केस में चांदनी को क्या करना चाहिए? वो फॉन्डली करते हैं कि एक सूप मंगाएंगे, 2 में डिवाइड हो जाएगा, पैसा आधा हो जाएगा. So let's not be so wise. Hello everyone, welcome back to another episode of Recoding Myself with CA Chandni Karnani. Today I'm going to recode myself with a very important chapter of life, that is fitness. Fitness नहीं तो जिंदगी नहीं. आजकल हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने बिजी हो गए हैं, करियर को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम फिटनेस को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी फिटनेस तो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. बिकॉज लेट इन 50s या 60s में ये रिपेंट नहीं होना चाहिए काश हम कुछ कर लेते, काश हम अपने फिटनेस के बारे में कुछ सोच लेते. तो इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है अभिषेक गौड़. ही इज अ लाइसेंस्ड फिटनेस ट्रेनर सर्टिफाइड फ्रॉम अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज. उन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन किया है. साथ ही में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम फिटनेस में भी स्पेशलाइज्ड है. उनका सफ़र एक्सिस बैंक के हेड ऑफिस बॉम्बे से स्टार्ट हुआ एंड कुछ फेल्ड स्टार्टअप के बाद हेल्थ इंडस्ट्री में उन्होंने एक सक्सेसफुल करियर बनाया. ही इज़ ओनिंग अ जिम फ्रॉम लास्ट 15 years and having the experience of fitness since then. And regarding education, he have done masters in marketing and IT, masters in computer science, diploma in event management. Also, he was a university topper in yoga and naturopathy. Even he is a sound healer too. And right now he is pursuing masters in yoga and therapy management. अभिषेक का growth and learning कभी नहीं रुकता. So today we are going to explore so many things, valuable things regarding fitness, health, lifestyle. So are you excited? Let's dive in. So welcome Abhishek to Recoding Myself. I'm so happy to have you here. Thank you so much, Chandni, and thank you so much for this opportunity that you have given me to come and discuss some of my favorite topics. And I think today we are going to cover so many topics. So let's get started.
Yes, please. Yes, we can. ओके, तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये फिटनेस जर्नी हाउ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, या बचपन से ही आप डिसिप्लिन काइंड ऑफ थे, या डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आप में पहले से थी, या फिटनेस जर्नी ने आपको चेंज किया है? तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिषेक टू अभिषेक द फिटनेस कोच, हाउ द जर्नी हैज शेप्ड यू फिजिकली एंड मेंटली? Oh, it's a very good question. You comment straight on the face. So I would say that Chandni, I have always been a sports enthusiast. बचपन Okay. से ही मुझे खेलने का बहुत शौक रहा है, और आई एम श्योर इफ माई पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट देन इवन दे विल से कि हाँ, सबसे ज़्यादा डांट मुझे जो घर पे पड़ी है वो ज़्यादा खेलने की वजह से पड़ती थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई वॉज ऑलवेज आउटडोर्स एंड आई वॉज हार्डली गिविंग टाइम टू देम और टू माई academics as well. So yes, discipline was there when it came to sports. So whenever there was a morning basketball game, I used to get up at 4 a.m. लेकिन स्कूल जाते हुए उठने के लिए माई मॉम शी ऑलवेज हैड टू गो थ्रू दैट ड्रिल, जब उठ जा, लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी. बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स Yeah. अपने आप Exactly. When it came to games or playing or any kind of sport or any kind of physical activity, I think I was always up for it, and I really used to look forward to go ahead and like take on that activity. Okay. And what how you have chose this journey? Like why only fitness? Well, why only fitness? Like most of us, जो हम लोगों के सभी के साथ में ऐसा रहता है कि we choose our careers as per market में क्या अच्छा चल रहा है, किस चीज़ का scope है. So when I started my journey, I was an average student. So I went to Pune for my graduation, and then after later on, लोगों ने बोला कि MBA कर ले, MBA में बहुत scope है. Then from a very good college out there, I did my MBA. And even during my MBA time, coming back to your original question, I was very active in all the curricular activities and the sports activities. So उसके बाद में I got a very good job in a reputed bank, Axis Bank में मेरी job लग गई थी. I was in Mumbai head office. I was working there, but eventually somewhere deep down in my heart, I always felt that this is not what I wish to be doing my entire life. मतलब everything was good, the job was good, the place was good, and even the working environment was also very friendly. But yet somehow there was a constant calling from the inside के Something this is Excel or this kind of software, जो चीज़ें चल रही थी, that is not me. This does not define what Abhishek is. So there was this constant urge of me. There's a second person calling inside कि नहीं Abhishek, this is not you don't want to do. But क्या था कि there was this so-called societal pressure कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो करना है, उसी के अंदर करना है, शादी भी करनी है, and then your life has to move on. So we are always safe zoned into that particular stream जो society के हिसाब से तो सही होती है, लेकिन not as per our wishes. वो satisfaction भी नहीं मिलता. Satisfaction नहीं मिलता था उसके अंदर. So then there was certain change of events. कुछ ऐसी बदलाव हुए जिसकी वजह से मतलब I had to come back to my hometown, and उसके बाद में one opportunity came. Had a few startups also done. They failed miserably, and they gave me a lot of learnings also. But eventually there was a turmoil going on in the existing setup that was in my place. तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे पास में मिली, एंड आई ग्रैब्ड इट, एंड देन आई डेडिकेटेड एंड डिवोटेड माई सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो दिस इज हाउ अभिषेक बिकेम अभिषेक द फिटनेस कोच. And actually, does it really help you in physically and mentally changes? Did you find some changes in that? Yeah, considering that my passion became my job, so it didn't feel like working. I always felt that my wife always keeps complaining that आप संडे को भी टाइम नहीं देते, because Sunday was used to be my toughest day because there was no people involvement, there was no one to train to, and I used to mess around with there कि ये तुम क्या खा रहे हो, ये तुम क्या बना रहे हो, this is not good, that is not good. Right. So the overall scenario of not having a break, कि एक भी दिन मुझे लगता था कि संडे क्यों आता है. अच्छा. So when I was working with the bank, I used to always dream for the weekends, Saturday, Sunday कब आएगा, कब छुट्टी मिलेगी. So that is when I realized that this is something that I actually wish to be doing, because a day off for me is like a boring day. So this is how I would answer your question कि भाई why did you choose this thing? Okay, considering your experience, आप इतने साल से इस फिटनेस जर्नी फील्ड में हो, तो आप काफ़ी लोगों से डील भी करते हो, काफ़ी लोगों को डाइट प्लान्स भी बना के देते हो. तो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विच एक्चुअली यू आर फेसिंग? व्हाट आर द एक्चुअल चैलेंजेस विच यू आर फेसिंग? कैन यू नेम एनी 3?
दिस ब्रिंग्स यू टू माई फेवरेट पॉइंट. तो अगर हम इसको डिवाइड करें ऐसे कि सो 3 सेगमेंट्स आर देयर जब हम फिटनेस को कंसिडर करते हैं. सो वील स्टार्ट इट फ्रॉम आवर हाउस ओनली. So Okay. there are people of our generation, the millennials and the Gen Z. Then we have our children, and then Right. we have our parents. Right. So I feel that our generation is becoming more and more aware. There's so much of data that is available on the net. We have so many reels, and there are so many influencers who are talking about good diets and good workouts and do this and do that. And we are consciously or subconsciously we are listening to them also. Right. So I feel कि हमारी जो जनरेशन है वो अपना ध्यान रख रही है because we are traveling, we want to look good, we want to look good in our pictures, and we are socializing a lot. So we make sure that all the dresses, expensive dresses that you are buying, you fit into them into the right way. So हम लोग आपस में एक दूसरे का बहुत ध्यान रख रहे हैं और खुद का भी ध्यान रख रहे हैं. But the biggest challenge that I feel now, because I have experienced that a lot of time, the mothers are bringing their children to the gym as well, and I'm really happy that even the kids are coming along with their parents. But when I see those children, I see they are lacking basic skills. मतलब their motor skills are not fine tuned, because when the mother is bringing, or mother or the father, they are bringing their children to this gym, they are just giving them an iPad और उनको अपना phone दे देते हैं कि by the time they are finishing their workout, the child will either just browse through the reels or the shorts, or the child is just left with an iPad and is just watching some YouTube, some poem, some rhymes or some content which saddens me completely. मतलब मुझे बहुत ही बुरा फील होता है कि भाई ये एक ऐसी जनरेशन है जो शायद तक हम लोगों का जितना आपका और मेरा फिजिकल फिटनेस को लेके या किसी फिजिकल एक्टिविटी को लेके एक्सपोजर रहा है, वो उनको नहीं मिल रहा है. मतलब दे आर इन द जिम एंड सिट, दे आर नॉट, रादर देन, एंड आई एम ऑलवेज सो ओपन टू इट कि भाई अगर इफ यू आर गोइंग टू अ प्लेस, द चिल्ड्रन आर फ्री, प्लीज ब्रिंग देम, लेट देम सी व्हाट देयर पेरेंट्स आर डूइंग. आई वांट the mother to set an example ki beta, this is how things are done, this is how I maintain. So Right. when they see all those things, they will be inspired through us. But if they are glued to a laptop, or they are glued to an iPad or any digital device, then how will they see what is happening around? They are not wanting to socialize with people around because they feel unka screen time kam ho jayega. So I am extremely worried that the children जो उनकी health है वो खराब होती जा रही है. उनकी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. आई सी पीपल अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो उनके बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई है. दे वांट टू Just थ्रो, because of mobile, actually. just because of Screen because time. इतना ओवर they are overburdened over with the love that we have given them. Just because I have the capacity to buy an expensive gadget for my Right. child, I have given him that leverage कि ठीक है तेरा बर्थडे है, take this 60,000 का ये ले ले. और my iPhone which I upgraded, I gave it to my daughter or to my son कि नहीं, it is safe and they need it because it is so much. But I'm not realizing the kind of content they are going through it. I'm not realizing how many hours they are spending on it, and how they have become extremely चिपक गए हैं. मतलब आप उनको the moment you try to take the phone away, उनके mood swings होने शुरू हो जाएंगे. They are so aggressive to that behavior. तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम मोर गैजेट्स कि ठीक है तू शांत रहे, लेकिन तू फोन चला. फोकस हम यही करते हैं कि तू शांत रहे. हाँ. But side effect we are not seeing that. what harm are those radiations causing them. We are not seeing the kind of content because they are not watching. Chandni, if you can recall the TV exposure that you and I had, we used to watch Ramayana and Mahabharata, and it was and that was also with a club of with the people, entire family. with the family. And I remember my house, there used to be like at least 5-10 neighbors who were there to watch Ramayana and Mahabharata. Even the contents were also like they were so clean, and they were so subtle that there was nothing that to worry about. Right. But abhi with this blast of technology, with the blast of so many influences, and there are the जो हमारे जो कर्ब्स हैं, जो भी लिमिटेशंस जो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस लगाती है, देयर आर ऑलवेज वेज टू डिफाई देम. सो आई एम एक्सट्रीमली वरिड अबाउट द कंटेंट दैट चिल्ड्रन आर वाचिंग. दूसरा उनका स्क्रीन टाइम हो गया. तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशलाइजिंग जो शुरू हुई है, मतलब द वे द बर्थडे पार्टीज हैव एस्केलेटेड, I can totally, and I guess we both can totally correlate that
एवरी मंथ हर महीने लगभग 8 से 10 सोशलाइजिंग इवेंट्स होती है बच्चों की 100%. and they are going there also and humbly under pressure just because suppose Chandni is a good friend so I'll make sure कि भाई मेरे बच्चे के जाने का मन नहीं है still I will ensure कि नहीं बेटा जाना है because it is your and my relation that I am trying to justify through them. तो अब इशू क्या है? द इशू इज नॉट विद सोशलाइजिंग. इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट चिल्ड्रन आर मीटिंग, वो लोग मिल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सो इट इज अ गुड थिंग. बट वहाँ पे क्या कंसर्न आ गया? द फूड. So every party that you visit to, even if I am throwing it or you're throwing it or any person in our close circle is throwing it, they are keeping foods like the easiest and I feel is the most evil food that can exist on this planet is the French fries. Really? Yeah, it is true. So it is Okay. deep fried. We don't even know how many times that oil has been used. Plus the Okay. potato, it is having a very high glycemic index and it is not at all good for us or for the kids Right. in this case. तो And the first and foremost, सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज ही ऑर्डर करते हैं. yeah, that is because it is your comfort. Because you know एक बच्चे को बच्चे घर में खाना खिलाना is a tough job for a mother. और वहीं पे if you are keeping a gathering of say 20 to 30 children और उन सबको if you plan कि नहीं इनको मैं salad खिलाऊंगी तो it is a task for you and none of us want to take that extra step or walk that extra mile. No, it's just because also कि बच्चों को पसंद है. At least Yeah. बच्चों को पसंद है, पार्टी में आए तो ये तो होना चाहिए. Yeah, so वो पार्टी का मूड सेट करने के लिए we are planting those food like French fries is there and Pasta is there. pasta is there and then you have that Maggi Maggi and then you have noodles. all other What? those somehow there is this जो ये Junk. all desserts junk. का जो concept है जिसके अंदर Right. those cupcakes are there. Right. So they're like big cupcakes and they're all filled with what all things that I can think I can of. totally correlate. I have just given the birthday party. So. You have given the birthday party, so it is true So on that part. according to you, what should be the ideal birthday party should be like? The birthday parties, concepts and themes, they're all good, Okay. and I guess you as mothers and parents, they are all doing a fantastic jobs because every party I go to is better than the previous one. So I don't think much changes and that is not my area of expertise. But Only when it comes to food. when it comes to food, I would say that whenever you are sending a child to a party, you Okay. make sure that he's eaten something at home. Don't send him hungry. Correct. मेक श्योर दैट व्हेन ही इज, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ट्यूशन से भाग कर आ रहा है, अरे रे पार्टी में जाना है, फटाफट रेडी किया उसको एंड देन वी जस्ट सेंड हिम ऑफ विद द ड्राइवर और यू जस्ट ड्रॉप देम ऑफ. नाउ वी डोंट रियलाइज दैट चाइल्ड हैड हिज लंच एट अराउंड 1:30 then he went for his tuitions or his classes or his sports activity and then he comes back, he's very hungry and we not feed, and then the first thing that he goes and sees there is like a big cupcake or it's like the French fries that you so say is the most favorite और सबसे ज्यादा चलने वाली डिश है. तो उसको वही दिखेगा तो he will just try to eat it as much as possible to satisfy that urge of his hunger and this thing. So I feel that whenever you're sending your child to a party, just make sure they've eaten something that is homemade and it is fulfilling so that he has that feeling of satisfaction. So when he goes to a party, so rather than just jumping or pouncing upon the food, he goes and explores the options. वो वहाँ जाके देखे, अच्छा यहाँ पे बाउंसी है, चलो थोड़ी देर बाउंसी में खेलते हैं, अरे यहाँ पे गेम्स की स्टॉल लगी है, लेट्स प्ले सम गेम्स. So rather than food being the primary focus, the focus should be mixing up with other children and the focus should be to play the games that we pay so much to have them there. So very well explained. I'm definitely going to do this. ये actually अब आपने बोल दिया है तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं. And ये तो हो गई बच्चों के बारे में. And what about elderly people? Yeah, the third segment that we discussed is our parents. Yeah. तो you see we are, as we discussed, कि हम लोगों को पार्टी करना है, हमको ट्रैवल करना है, so we are trying our best to be in the best shape. But just imagine a scenario when you are the only child and you are married and your parents, one of them falls sick. So do you feel if you had a Europe trip planned, would it be successful or would you be happy doing that thing? No. Because if your mother is sick, then may it call societal pressure or maybe your personal responsibility, you feel it, but you would not like to take for the trip. So it goes to a toss. So what I'm trying to say here is कि हमारे पेरेंट्स हैं, their health is deteriorating by the day, है ना, and they are trying to come up with excuses कि नहीं हम तो प्राणायाम कर लेते हैं, which
I'm sure only a handful of them are doing. If they are going to a park, I keep visiting parks very frequently. So I see there is generation of my dad and my other similar aged people. So they are just sitting and gossiping. Right, right. They yeah, there are certain very funny incidents. I would say that they are meeting up for those so-called health meets, but they're ordering all the kachoris Samosa, and kachori. samosas and jalebis. They're all coming there. Right, I So have even seen that. you must have seen that, and I have seen that, and it is a sight to see them. They are enjoying so much because at home there are restrictions. At home Yeah. there are restrictions, but when they are with their friends, their company, they are very strong out there. So they try to dominate the entire thing by कि नहीं समोसा तो खाएंगे. And I am sure कि इस पूरे ग्रुप के अंदर एक आधा ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता. They will always try to set an example कि एक वो फलाना आदमी था and he used to eat kachoris and he used to eat all the desserts and he is lived 90 years old. So by setting that example, they are just trying The to unexceptional examples. yeah, they are trying to reduce the guilt of all the people who are there and उनको भी तुम भी खाओ. There's no problem eating all because that particular person lived 90 years very healthy because he used to eat kachoris and all. So this is what I feel is we are facing with the parents, and how do you take care of these things? इसमें I think we should introduce the concept of gymming, yoga, or cycling, or whatever equipments that you By decide what to. age, like one can join the gym? Like 40s, after 40s, after 50s, also one can join the gym. There is no age to join the gym. I've been training clients who are 75 years old and they have a lot of confidence. A lot of confidence has come back to them since the day they joined. So we need to see that our body is losing muscle mass every year. There is a Right. percentage of muscle mass that is reduced year on year. So our parents, they were the generation who had to struggle through a lot. Right. They did not have the access to healthy food, or a lot of us they were the strugglers. So Right. who had to just cut down on their meals. They had to skip their meals. उनका टिफिन घर से जाता था, but it used to come as it is because इतना काम होता था कि वो लोग खाना ही नहीं खा पाते थे टाइम पे. और फिर जब रात को भूख लगती थी उस समय they used to just eat whatever was Whatever. available. तो I think this struggling generation जो हमारी पेरेंट्स की है, they have been devoid of nutrition, है ना. And if you, it is not very far off जब हमारे यहाँ पे लड़का और लड़की के न्यूट्रिशन में भी भेदभाव किया जाता था in Right. their age. Right now तो we are treating everyone as equal, which should be the case. But our parents were of that generation जहाँ पे maybe my mom would have got lesser nutrition, maybe my mama or my maternal uncle, they must have got a better nutrition because they were supposed to work in the fields. So this was the common mindset कि लड़के को काम ज़्यादा करना पड़ता है. दे हैव टू डू फिजिकल लेबर, सो ही नीड्स मोर न्यूट्रिशियस फूड. लड़की को सिर्फ घर का काम करना है, उसको सिर्फ चूल्हे चौके का काम करना है. सो शी ऑन द अदर हैंड डज नॉट रिक्वायर सो मेनी न्यूट्रिशन, एंड वी आर नॉट जजिंग देम बाय व्हाट दे डिड बिकॉज उस the टाइम वही availability चलता of था. resources, Everyone have a story yeah, of the that. resources were limited. So if you Yeah. had the access to one laddu, they would give it to the guy कि तू खा ले because तेरे को जाना है काम करने बाहर. So we are not judging anybody's parenting, but उस समय परिस्थितियां ही वैसी थी सारी की Right, सारी. right, right. So coming to your question कि किस अब age क्या में कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं. So अब if क्या we कर take the case of your and my parents, what you can do is you there are multiple options. Like if you can afford it, you can get a trainer at your home, suppose, because हमारे parents को क्या उनके एक so called mindset है कि gym is for the young people, Right. कि सिर्फ जवान लोगों के लिए है और वहाँ पे वेट्स उठाएंगे हमारे कुछ इंजरी हो जाएगी. So they are clouded with a lot of myths, and maybe we are not in the position to burst those myths right now. So हमें उनको exposure देना पड़ेगा धीरे धीरे. So we can call a trainer at home and we Okay. can tell them कि we start doing some strength training. So for seniors there are a lot of courses that are available, lots of workshops are there, and with the right trainer जिनका पास में certifications हो seniors को train करने का, and with the physio parallelly in hand. So the role of physiotherapist I would like to highlight in this place, because इस age के अंदर you need to have a physiotherapist in the channel. Okay. So the trainer, the physiotherapist and our parents, they have to work hand in hand. So because ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वीकनिंग ऑफ बोन्स है, कैल्शियम की कमी होती है, इस सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती है. तो
उनको एड्रेस करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव योर जनरल फिजिशियन इन द लूप, you need to have your physiotherapist in the loop and your trainer. So when they all will work in a pattern, तो उस समय हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे अपने पेरेंट्स के लिए. ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि स्टार्ट करना ज़रूरी है एंड विद द ट्रेनर. एंड व्हाट इफ सपोज एकदम बिगनिंग, एकदम स्टार्ट, आई मीन इफ समवन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम होम, इनिशियल स्टेप क्या ले सकते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, ना वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए टू बिगिन विथ? So I feel in this case what I can correlate is कि उनके अंदर उसको करने का मोटिवेशन नहीं है. राइट. Because somehow this generation has this habit कि भाई अब हमें क्या है, हमारे कितने साल बचे हैं, मतलब दे आर ऑलवेज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दैट आइडिया कि अब क्या करना है, अब तो बस ठीक है चल रहा है ना हमारा, ठीक है अभी कुछ हो गया. सो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है विद एज. सो दे आर स्केप्टिकल अबाउट दिस थॉट कि नहीं यार कल को हम लोग कुछ कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो गया तो उससे बेटर है कि हम कुछ ना करें. सो वी नीड टू एजुकेट देम कि भाई आपकी मसल मास कम हो रहा है एंड वी वांट यू टू, जो भी आप खुद के काम खुद करते हैं यानी उठना, बैठना, वॉशरूम जाना, नहाना, उस काम को अगर आपको लंबे समय तक करना है without the dependency of any other person, you need to do this strength training exercises. तो जब वो डर, which is must. it is not the maybe the right way to do it, but this is sometimes it is the only option. When there is no motivation in them person, तो कई बार उनको बच्चे को हम डरा के कई बार सुलाते हैं राइट कि सो जा नहीं तो ये होगा. So it is now maybe अब अपना टर्न है. so it is now maybe our turn to tell them if you don't do this then these bad things will happen to you. राइट. तो that sometimes works well as a motivation. अगर वैसा नहीं हो पाता है तो somebody from our generation, from your age group should practice with them. राइट. You make them sit, आप बेसिक प्राणायाम से शुरू करो. If you expose them to dumbbells तो शायद तक वो डर जाएंगे उससे कि भाई डंबल से तो हमें मसल्स थोड़ी बनानी है, why do we need? So start with प्राणायाम. तो क्या होगा, if they are not doing any activity तो उनकी जो मसल्स हैं वो वीक होगी. They will not be able to sit straight for a long time. So that is when this thing is going to hit them inside कि भाई अरे मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ. तो when while doing pranayam all these things will come. तो उनको थोड़ी देर ध्यान लगा के देखो आप. So जब इन सब चीजें करेंगे ना तो उनके either the legs, the inner thighs will start paining or their back will start paining, and that is when the reality check is going to happen on them. तब लगेगा हम लोग तो सीधा बैठ ही नहीं पा रहे हैं. Because accepting the age and being the age there is a difference. Right. A lot of people do not accept the age. So उस समय शायद तक उनको अपनी एज को लेके एक्सेप्टेंस आ जाए कि भाई एज हो रही है and we need to do something about it. That is the right time that you introduce them to a trainer or you send them to a gym. So when you go to a gym, so they will feel and make sure that gym is an environment which is not very this thing कि भाई बहुत ज्यादा यंग क्राउड ही आ रहा है and it is lots of loud music is I there. feel this is the right place full of energy to do the. आप विदाउट माइंडसेट के साथ भी जाओगे लेकिन जिम जाते एक एनर्जी, एक ऑरा, वो फील अपने आप होने लगता है. Yeah, so if you have a good gym in your vicinity, तो उस केस में क्या है कि आप उनको वहाँ भेजिए and go with them. Right. Because that you to break that ice कि भाई जिम क्यों जाना है. When you go with them, introduce them to a treadmill, introduce them to a few friends and कोशिश करो कि वो जो पार्क में उनका जो ग्रुप बनता था ना उसमें से ट्राई टू ब्रेक 1 or 2 members और ट्राई स्पीकिंग टू देयर चिल्ड्रन कि देखो आवर पेरेंट्स आर एजिंग एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट देम. उस केस में क्या होगा, जब उनके ग्रुप का कोई वहां पे साथ में होगा ना, दे विल फाइंड द कंपनी ऑफ अ सिमिलर एज्ड पीपल. तो उनका वो जो डर है, जो इंटिमिडेशन है उस जगह को, स्पेस को लेके जो मिथ्स है वो बर्स्ट होगी. तो अगर वो कंपनी हमने पार्क वाली जिम में क्रिएट कर दी, सो आई एम श्योर वहां पे वो कचौरी, समोसे और जलेबी तो नहीं आ पाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी एड ऑन हेल्प एंड इवेंचुअली वंस यू आर देयर, जस्ट लाइक यू वर स्पीकिंग के, वो जो ऑरा होता है जिम का या वो जो स्पेस के अंदर एनर्जी फ्लो होती है, इट मेक्स यू वांट टू डू समथिंग. So I think that is what will set them into flow और उसी से शायद तक उनकी एक फिटनेस जर्नी की शुरुआत हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है. So अभिषेक, you are here. तो आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? फ्री डाइट प्लान या फ्री एक्सरसाइज, मुझे ये बताओ कि प्लान बना के बताओ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या करना चाहिए, सो दैट आई कैन जस्टिफाई माई क्लोथ्स,
so that I can justify myself to be fit enough and strong enough? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. और दोनों लोगों के फ्री के बाद में मुझे कुछ सुनना बंद हो गया था. आई कुड नॉट हियर व्हाट यू वर आस्किंग. Right. बट let's do this. So I have a question for you. अभी तक चांदनी जो है वो क्या कर रही थी? I have tried many things. मैंने वॉक किया, मैंने जिम किया, मैंने जुम्बा किया. थोड़े थोड़े टाइम में जैसे जैसे जब नेट में भी कुछ ना कुछ देख लेती थी, रील में वो भी किया. बट आई एम नॉट गेटिंग एज दैट results. I am not getting that. So what I should do? So चांदनी, what I feel is that जो missing part है ना वो activities नहीं है, वो missing part है discipline. हाँ. You are not sticking to one thing. That is. और शायद तक फिटनेस को लेके ना हम सभी के साथ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हमें लगता है कि आई हियर अ फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली जो जुम्बा कर रही है एंड शी इज लॉस्ट अ फ्यू पाउंड्स, और वो तुम एंड यू मीट अप एंड यू आस्क कर रही तू पतली कैसे हो गई, एंड शी से अरे मैं तो जुम्बा कर रही हूं, देन यू फील जुम्बा इज द थिंग, मुझे जुम्बा करने से ही मैं पतली होंगी. एंड देन यू जॉइन अ क्लास एंड यू डू इट फॉर अ कपल ऑफ डेज, फिर कभी नी पेन हुआ, कभी बैक पेन हुआ, एंड सम और अदर एक्सक्यूज जस्ट कम्स अप एंड देन यू आर लाइक नहीं जुम्बा से तो नहीं हो रहा. फिर देन यू जस्ट कीप अ लॉन्ग गैप. फिर then you land up in a party जहाँ पे you find another person who's looking very fit in that dress. So you ask her कि तुम क्या कर रही हो? And she says अरे मैं तो जिम जा रही हूँ. And then you will अच्छा जिम से पतले हो रहे हैं, let's go to the gym. Then you take the membership to a very expensive gym, but ultimately you are not going there regularly as well. Consistency. So this thing is happening to all the areas of field, and then we are constantly fighting that war कि भाई हो नहीं रहा है. योगा से होगा या जिम से होगा या जुम्बा से होगा या फिर गार्डन में वॉक करने से होगा, किस चीज से होगा. एंड there is so much confusion even. करे क्या? So this is exactly like when you have too much on the plate and you get confused what to eat. तो मेरा जो सोल्यूशन चांदनी के लिए रहेगा सो कॉल्ड फ्री के अंदर थैंक यू सो मच. फ्री में ये रहेगा कि डू नॉट चूज एनी साइड्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राउंड में रनिंग करने से होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा से ही हो जाएगा. सो आई थिंक इफ आई वर योर हेल्थ कोच आई वुड रिकमेंड कि चांदनी नीड्स टू हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योगा शुड ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड फॉर नॉट ओनली द फ्लेक्सिबिलिटी परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द इंटरनल, जो उसमें हम लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो नाड़ी शोधन होता है उसके अंदर, एंड ऑल दोज षटकर्म एंड पंचकर्म जो क्रिया जो आजकल बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं. सो यू शुड गो फॉर दोज ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट once in a week you should go for an outdoor walk also. मतलब just put on your favorite playlist और तुम्हें लगता है कि भाई आज संडे है and everybody is going to wake up late. So that is the time when Chandni should get up early. She should put those headphones on in the ear and she should just head out to go to a park, go to choose some safe place where you can just go take multiple rounds, or there is at least a 5 kilometer or a 10 kilometer walk that you are doing for yourself. So with all those things mixed, I think the best version of Chandni is going to come out. The strength training is going to help you help you with the inch loss. It will help you tone up your body. It will be building up new and new muscle fibers, so you will look younger, you will feel younger. The cardio training is for the heart. So when you're going for those long walks, you are helping your heart. Your heart is saying, thank you, Chandni, so much for taking care of me. Right. And when you talk about yoga, it is for your mental peace, it is for your flexibility, and it is for a variety of things. Yoga basically covers a lot of big aspects in life. So yoga is very, very huge. It is not like something just to be treated as like a it is not about doing those fancy poses where you tie yourself like a knot and you are hanging. So yoga is not about that, but we'll not get into it right now. So my advice to you is like go for multiple things, go for all of them, go for strength training, go for outdoor walks, you should do Zumba also, and all these things will create a better and a stronger version of Chandni. Okay, is this the 360-degree approach? So this is what I personally like to call the 360-degree approach to fitness, where you inculcate all the good things, all the things that are available, and you just mix them up. Right. Because honestly speaking, I go to gym and gyms are very boring. They are very boring places. So you require a lot of discipline and consistency to fight that boredom and find enjoyment and entertainment and doing that same exercise for repeated times for n number of times. So when you practice an outdoor sport, like you can make a small group of girl gang, and you can even take your children or your spouse to a badminton court.
I think we all Indians are trained to be decent badminton players. We can all Right. play badminton. Right. So you introduce a sport to yourself. बैडमिंटन Right. खेलने जा सकते हैं और some any other outdoor activity. हम लोग travel plans बनाते हैं. We try those all. We are always looking forward to those fancy hotels and those fancy dinners. So this time make a travel plan that has trekking in that. So when you're going to a place, it has a 6 kilometer, 5 kilometer trek, which exposes you to nature. Right. It does send a message to your brain also that you came here for a mental peace, and even the health is also not equally not Right. fine. Right. So in that way, you should keep a mix of everything. Don't choose sides. This is not like some world war going on that you have to pick one side and then do it. So just keep everything is should be in your plate. This is what I feel. ओके मुझे एक और सीक्रेट जानना है. ऐसी 3 चीज़ें क्या है जो नहीं करूँगी मैं तो फिटनेस के बारे में सोचना नहीं चाहिए. जो नहीं करेंगे, नहीं करूँगी तो फिटनेस के बारे में मत ही सोचो. आलस विल बी द कॉन्स्टेंट. ओह गॉड. अगर आप आलस करेंगे तो फिर शायद तक फिटनेस के बारे में अपन नहीं सोच सकते. राइट. Also, I feel that you need to have a lot of discipline in food. Because people are always putting this burden on the yoga trainer or the Pilates trainer or the gym trainer कि हम तो कर रहे हैं, weight क्यों नहीं कम हो रहा. Right. So that poor thing, that person who is in charge, and he's wondering कि भाई everything सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई इनका मैम का या सर का weight कम नहीं हो रहा है. Why are they not able to achieve? What is the ratio between exercise and diet? Like I think it is 100% diet and 100% workout. You cannot Okay. just club them together. So I Okay. have heard a lot of people talking हाँ. कि 70% nutrition होता है, Right. 30% diet होता है. नहीं, it is not like that. You have to Okay. give your 100% to the workout and you have to Okay. give your 100% to the nutrition. जब ये Okay. दोनों 100 मिलते हैं and then those things are combined, that is when you start getting results. okay. Third point, to finish your third point, I think जो sleep cycle है, it is extremely important. आज के समय में क्या है कि you are playing your responsibility as a mother, as a bahu, and as you're working also, and you have other things to cater to. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सोशल लाइफ को भी बैलेंस रखना है, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखना है, बच्चों को भी संभालना है. सो जो सफरिंग हो रही है ना, इट इज़ ऑन द पर्सन हु इज जगलिंग ऑल दीज बॉल्स ऑल टुगेदर. Right. तो इसमें जो सफ़र किया ना, वो तुम्हारी स्लीप साइकिल सफ़र की. बिकॉज यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू मेक डिफरेंस फॉर योर चिल्ड्रन Right. एंड whatever. Some people have to go to the office early morning. लेकिन हम लोग हमारी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसके अंदर. सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, योर बॉडी इज नॉट रिकवरिंग, इट इज नॉट हीलिंग. And so many hormones, they just function well when you are sleeping properly, because Okay. the entire recovery, the entire healing that is happening, it is happening at night only when you are at rest. So if you are not resting, it means you are not allowing or giving your body the time to heal and to recover, and the next morning we are again burdened the body with the same set of process के हाँ Right. जिम गए वहाँ के, लेकिन नींद नहीं हो रही. हाँ. So I think sleep is something that is extremely important in the This I entire can do. process. This you can do. This I Great. can do. Okay. So अभिषेक, हम भारत में रहते हैं और वहाँ 365 दिन कुछ ना कुछ त्यौहार होते ही हैं, फेस्टिवल्स. और ऐसे भी देखें तो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ ओकेजन्स में हम सेलिब्रेट करते ही रहते हैं, एंड दैट टू ऑफ अ रिच फूड. सो व्हाट इज़ योर टेक इन दैट कि वो रिच फूड्स हम कैसे, और अभी तो फेस्टिवल भी अराउंड है, दिवाली इज़ कमिंग, सो एवरीवन विल बी गोइंग फॉर स्वीट्स एंड ऑल दोज रिच फूड्स. तो उस टाइम हम क्या कॉन्शियस ईटिंग करें सो दैट हमें गिल्ट भी ना हो और वेट भी इंक्रीज ना हो. सो व्हाट वी कैन डू दैट कि कॉन्शियस ईटिंग करने लग जाए हम. Shani, you're very right. India is culturally very rich. चाहे हम किसी भी स्टेट में जाएं, हम हर ओकेजन के साथ में किसी ना किसी फूड को हमने एसोसिएट किया है. राइट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस पर्टिकुलर वेदर में ऐसा क्यों खाना खाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ बिग आइडेंटिटी क्राइसिस दैट इज़ गोइंग ऑन. हम लोग शायद तक मिक्सअप हो गया है बहुत बड़ा. सो व्हेन अ पर्टिकुलर स्टेट इज़ देयर, उसका एक पर्टिकुलर वेदर होता है. ओके. ठीक है, उस वेदर के अंदर वो फूड बनता है एंड दैट फूड इज़ गुड फॉर अस. लेकिन हमने एक मिक्सअप कर दिया. हमारे यहाँ पे अक्षय तृतीया आती है, इसके अंदर हम लोग खिचड़ा बनता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ घी. तो उस समय इट इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. भारत Right. जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड रहा है.
तो अक्षय तृतीया के आसपास में क्या फसल की कटाई होती थी और मैनी थिंग्स यूज्ड टू टेक प्लेस, जिसके अंदर बहुत लेबोरियस काम होता था। राइट। तो उसके लिए आपको वो खिचड़ा जो कि हाई कैलोरी फूड था वो आपको खाना ही पड़ता था। लेकिन हमने क्या कर दिया, हम खिचड़ा भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स के साथ में जाके मोमोज भी खा रहे हैं, रात को दोस्त आए तो पिज्ज़ा भी मंगा लिया। तो हमने एक बहुत बड़ा एक डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया। सो इफ यू वर स्टिकिंग टू व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स एट दैट टाइम, तो शायद तक इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन हमने हमारा फिजिकल लेबर एकदम कम हो गया। सो वी हैव आवर प्लेसेस दैट आर सो क्लोज, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग गाड़ी में यहाँ से वहाँ जाएं। वॉक करना हमारे लिए ऐसा माना जाता है कि लोग हमें क्या सोचेंगे, पीपल विल जज कि इनके पास गाड़ी नहीं है क्या, ये पैदल क्यों आ रहे हैं। सो इट हैज बीन सो मेनी इंस्टेंसेस व्हेन आई एम यूज्ड टू वॉक फ्रॉम माय वर्क प्लेस टू माय हाउस। तो अब व्हेन यू लिव इन अ सिटी तो वहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, तो वो कहते हैं अरे क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई क्या। सो नोबडी सेज कि भाई मे बी इट्स अ गुड थिंग दैट समबडी इज ट्राइंग टू वॉक बैक देयर टू होम। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो फूड खा रहे हैं और जो शायद तक हमारे जितनी मेहनत मेरे ग्रैंडफादर या जितने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर करते थे उतना हार्ड वर्क या मेरी लाइफ वैसी नहीं है। इट इज मोर कंफर्टेबल। सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रेप्लिकेट देयर डाइट, बट आई कैन हैव द सेम फूड इन अ स्मॉलर अमाउंट। अगर वो खिचड़ा मुझे खाना है सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ बनता है, तो उसको हमें उसकी मात्रा कम कर देनी है। उसको आप कम मात्रा में खाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ होम कुक्ड। जो घर का घी है इट इज़ वेरी हेल्दी। घी को लेके किसी भी तरह के हमको उसको एक विलन नहीं बनाना है हमारी लाइफ में। अच्छा, इज इट सो? क्योंकि हम अवॉइड करते हैं घी को। इज एन अमेजिंग थिंग टू बी इन योर डाइट अनलेस योर डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड नॉट टू। और घी हमें खाना चाहिए, बहुत ही एसेंशियल है घी के अंदर एक कोलिसिस्टोकिनिन CCK बोलते हैं, उस नाम से एक हार्मोन होता है जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन लेके आता है। अच्छा। तो जब आपका जो भी रात का डिनर होता है उसमें इफ यू आर हैविंग दाल और व्हाटएवर फूड दैट यू आर हैविंग, उसमें आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए। सो जो हमें खाना खाने के बाद में जो क्रेविंग्स होती है, जिसके अंदर हम लोग भुजिया या नमकीन या कुछ चट पापड़ी जो भी अनहेल्दी जंक स्नैकिंग हम लोग करते हैं, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, बिकॉज दैट घी विल कीप यू सो मच सेटिस्फाइड दैट यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। प्लस उसमें स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स भी होते हैं, इसकी वजह से नींद अच्छी आती है आपको। सो घी इज नॉट अ डेविल फूड, घी इज वेरी गुड फॉर यू। एंड आई थिंक अनलेस इट इज नॉट एडवाइज्ड कि भाई आप घी को छोड़ दें, तो आई थिंक एवरीवन शुड कंज्यूम घी इन द राइट अमाउंट इन देयर डाइट्स। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन चांदनी, कि जब 365 दिन त्यौहार हो रहे हैं तो उसको हम कैसे डील करें। तो डील करने का तरीका ये है कि आप अगर कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, एज आई रिकमेंडेड इन द चिल्ड्रंस ऑल्सो, कि आप घर से कुछ खा के जाओ। Do not go hungry so that you don't just jump onto a food that is looking very delicious. तो अगर आप कुछ खा के जाओगे तो आप अपनी हंगर को सप्रेस कर पाओगे कुछ लेवल तक। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब भी इस तरह के ट्रेडिशनल फूड्स बनते हैं, गिव देम द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, बट हैव इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उसका पोर्शन साइज कम कर दो। इफ यू फील देयर इज अ पर्टिकुलर फूड, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कई स्पेशल ओकेजन्स पे हलवा बनता है ना, इट हैज अ लॉट्स ऑफ शुगर, सो उसके अंदर कुछ हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। So rather than putting in white sugar, you can put in some shakkar. It will be equally sweet. और या फिर उसमें हम लोग डेट्स डाल सकते हैं, जो खजूर होते हैं उनकी गुठली को निकाल के if you add them, so they act as a very good sweetener. प्लस उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, तो उसकी वजह से वो जो मील है वो हेल्दी बन जाती है। एंड कंसिडरिंग द रिचनेस ऑफ दैट मील, so when if you feel that meal has a lot of ड्राई फ्रूट्स, इट हैज अ लॉट ऑफ घी और ऑयल इन इट, तो उसकी आप क्वांटिटी कम कर दो एंड स्किप द मील। बस उसको उसी को अपना खाना बना लो। कि अगर आज हलवा बना है, सो देन डोंट हैव द रेगुलर मील्स विद दैट, बिकॉज दैट इज कैलोरी सरप्लस। आप जितना खाना था उतना तो आपने खा ही रहे हो, प्लस वो जो साथ में जो स्पेशल मील थी वो हमने उसके ऊपर ओवर कंज्यूम कर ली। सो इफ यू कीप दैट माइंडसेट, आई एम श्योर यू विल नॉट बी गेनिंग एनी एक्स्ट्रा फैट। आप सरप्लस की बात कर रहे हो, हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम खुशी में भी खाते हैं, हम गम में भी खाते हैं, जब इमोशनल सेटबैक्स हो तो भी खाते हैं, स्ट्रेस में भी खाते हैं, और कुछ नहीं कर रहे तो भी खाते हैं कि मूड एक्चुअली ठीक रहे उससे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है टू उसको रीट्यून करने का। Yes, you are. And recoding is all recoding is all about this.
So you are very very right. When we are emotionally down, so the brain is wanting some sugar rush. Right. तो उसके लिए the first thing that you feel is you rush to the fridge and you just want to grab a bowl of ice cream and you just want to And have how many it times watched. I have done this. Yeah. So whenever you are feeling low, you will always look forward to it because we are not getting that जो hormonal जो happiness होती है ना, हम लोग उसको food से associate कर रहे हैं. Right. तो I think Chandni, this is a problem at large. It is not only you. This is a problem at large. And उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि हमने बचपन से ही शायद तक है ना हर सेलिब्रेशन को फूड से एसोसिएट किया. Right. बच्चा पैदा हो गया, चलो हलवा बनाते हैं. बच्चे का आज अन्नप्राशन है, चलो आज ये बनेगा, चलो आज ये बनेगा. एंड जस्ट टू जस्टिफाई टू द सोसाइटी दैट वी आर गुड, वी आर रिच, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. टू प्रूव दैट पॉइंट हम लोगों ने हमारी मील्स को एक्स्ट्रा रिच बना दिया. Which was not needed. Maybe 3 generations earlier, when we were mostly doing a lot of work with Physical work, it was justified. But right now, when we are traveling in air-conditioned cars, we are not walking, और जिम जाना is considered to be अरे यार तो टाइम नहीं मिला तो आज नहीं जा पाएंगे. You have to do whatever practice that you're doing. So when we are looking for excuses to skip our exercises, but we are not looking for excuses to skip our meals in the right time. So that I guess it answers your questions very well. कि हमें खुद को ही एक conscious effort करना पड़ेगा कि that food and entertainment are 2 different things. If you want to meet over a coffee, जैसे I would like to know कि Chandni, जैसे you are approaching so many people so many people are approaching you, let it put this way, for their podcast to feature on this podcast. So how do you deal with it? How many times in a month do you have to go for a lunch date or for a dinner date? Or you have people coming to your house, or you are going to somebody's place to have that conversation? Like monthly, it can be 4 to 5 times this, and apart from that, social gatherings, social like every meetings are there. तो उसमें भी अच्छा खासा चाय पीना हो जाता है with उसके साथ सैंडविच and whatever extra. I feel everything is extra, which is not needed, which can be skippable. Yes, you are right. So if we think of it in such a way कि अगर हमें इसके ऊपर एक नंबर लगाना है कि how many times Chandni is eating outside, I think it will be around 10 to 15 meals. Yeah, 100%. 10 to in 15 a month. meals in a month we are having outside. So this is your job, like this is your profession, and you have to do this. I cannot tell you कि नहीं बाहर जाना बंद कर दो, घर पे रहो. So that is impractical and I would not recommend it also. तो इस केस में चांदनी को क्या करना चाहिए? Is whenever you're going for a coffee, suppose you are meeting up with a friend over a discussion something, or you are meeting with a marketing partner, or you meeting with any digital promoter. Right. तो उस केस के अंदर order yourself a black coffee, Americano, है ना, and just stick to it. Don't order those extra French fries or those garlic breads or pizzas or whatever you feel Sandwiches that or- just so you need to make that person understand that I respect my health and I respect my body. So please do not judge me on this basis that I have not ordered 10 different menus or 10 different meals just because I am with you to impress you. So that should not be agenda. So once those things get clearer, okay, let's have a healthy meeting which does not involve much of it. And if you are meeting somebody for a lunch, अगर वो lunch पे मिल रहे हैं, तो उस समय you can choose your menu wisely. You can choose the place wisely. Don't go to a cafe which was always filled with sandwiches and burgers and pizzas. Choose a restaurant. Choose a restaurant that has main fine dining. So उस केस में you can choose, like, you start with a salad. So, and you were asking for a free diet plan, right? Yeah. So this is where the free diet plan comes in. So when you are sitting and the conversations just start to build up, order a salad for you and try to have more of it. Then order a dry starter for you. Like it's like a paneer tikka or some hara bhara kebab, something that is less processed. So Okay. have something like that, and then order a soup for you. You can order a veg clear soup, or you can anything that is less spicy and has less salt in that. So once you've had the salad, you've had the starter, and you've had the soup, and make sure soup का 1/2 नहीं करें, जो कि हम लोग बहुत Generally करते ही हैं। fondly करते हैं कि एक soup मंगाएंगे, 2 में divide हो जाएगा, पैसा आधा हो जाएगा. So let's not be so That. wise. So order a full soup for you. So when you had these 3 things, you had the salad, you had the starter, you had the soup. So there's very less space that is left in the stomach. So उस समय I would recommend that you order dal and roti. Don't order the naan. Don't order those garlic naans. Don't order just plain roti and dal.
बिकॉज इतनी ही स्पेस होती है स्टमक के अंदर. Correct. एनीथिंग बियॉन्ड दैट वी आर जस्ट स्टफिंग आवरसेल्फ एंड दैट इज कैलोरी सरप्लस. So this is how your dinner meals or your lunch dates should go around. So this is how you plan it, and if you follow this, I'm sure even if you're having like 20 meals outside, that won't be a problem for you. थैंक यू सो मच. दिस वॉज एन आई ओपनिंग टाइप्स कि हाँ ये भी तो कर सकते थे. वी हैड द चॉइस बट वी डिडंट डू दैट. सपोज पार्टी तो हो गई, उन्होंने सब कुछ किया, खाया भी पिया भी. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? So you were just saying कि मर्डर तो हो गया, अब कैसे उसको हम कवर अप कर सकते हैं. राइट. So आजकल ये सब भी सुनने आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया. व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग? लेकिन आज जब मैं देखता हूँ मेरे जब द नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो दे जस्ट कम एंड कंप्लेन एंड द पेरेंट्स आर जस्ट गोइंग देयर येलिंग एट द स्कूल मैनेजमेंट कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया आपने. तो हमने क्या कर दिया कि हमने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इसके कोकून में डाल दिया. गिव मी वन सोल्यूशन. और क्या उसको प्रैक्टिस हम ऐसा क्या करें कि जिससे मेंटली वी कैन बी स्ट्रॉन्ग? आई वोंट से एंजाइटी इज नॉट विद इन मी. समटाइम इट्स कम. हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन दैट पार्ट? Of you that should be dedicated and devoted towards a spiritual figure. It can be a guru, it can be a entity, it can be anything. So if I am going through any issue or if you are going through an issue, so rather than asking someone to come over with a bottle of wine or with anything that you feel is like a substance that is going to temporarily just stone you, उसके बजाय आप किसी अच्छे मंदिर में जाएं, वहाँ बैठें थोड़ी देर. मंदिर, मस्जिद, जो भी आपका place of worship है, go there, just be with yourself and just see there is a supreme power. Yoga in itself is a big universe. अपने आप में एक ब्रह्मांड है. तो हेल्प डेफिनेटली बहुत मिलती है. और योगा में जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो अष्टांग योग है उसके 8 limbs हैं. There are the 8 legs of the योगा. तो उसके अंदर आपके जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 पार्ट्स होते हैं. पर ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर हस्बैंड बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, द वाइफ इज एक्सट्रीमली ऑपोजिट. शी जस्ट वांट्स टू लेजी अराउंड एंड नॉट डू समथिंग. द हस्बैंड इज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. द वाइफ barely wants to go out of the house. She just enjoys her bedroom and her space. There are so many diet plans. GM diet plan, intermittent fasting, keto diet plan, and list goes on. And there is so much confusion regarding that. So what you will suggest for a layman person should follow a diet? सिर्फ गेहूं की रोटी खाने रहने से कई बार we have seen कि भाई the body gets deficient in nutrients. तो जो बाजरा की न्यूट्रिशन है वो अपने को मिल जाएगा, मक्के का है वो मिल जाएगा. इस तरह से so keep changing your grain, but don't mix all the grains in one. Is this a myth कि आपको अपना खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए? Not a myth. A lot of theories suggest कि जो sun का movement होता है, the way sun rises and the way sun sets, उसी तरह से हमारी जो एक डाइजेस्टिव फायर होती है, उसको योग में, संस्कृत में जिठार अग्नि भी कहते हैं. रात को बहुत हेवी खाना खा लिया तो क्या होगा, द बॉडी विल बी बिजी डाइजेस्टिंग एंड दैट फूड, एब्जॉर्बिंग दैट फूड. सो हाउ विल द हीलिंग पार्ट टेक प्लेस? So we need to give the system a rest and let the body do its healing and recovery. जिम में इतने हार्ट अटैक्स देखने मिल रहे हैं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक. That is why we are choosing fitness. But since we are so stubborn and we are so now we'll not get into details कि भाई लोग जिम में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, majority of gyms के अंदर. But let's not get into those details. पर ऐसा हो रहा है. Somewhere people are pushing themselves to an extent कि भाई ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, medicines ले ली, and a lot of things are happening.